हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो है रेड फोर्ट पे क्रिएटिव राइटिंग। जी हाँ, आप इसे पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग भी कह सकते हैं। और कई बार स्कूल्स में हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आती है अबाउट एनी मॉन्यूमेंट। तो किसी भी मॉन्यूमेंट के ऊपर अगर आपको लिखना आता है तो यहाँ पर रेड फोर्ट इज़ वन ऑफ द मॉन्यूमेंट। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टिप्स आपको मिल सकते हैं किस तरीके से आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग को और अच्छा बना सकते हैं। द मुगल emperors built many historical buildings during his period. The one of them is the Red Fort. It is situated on the bank of river Yamuna, opposite the well-known Chandni Chowk market. It is one of the historical structures of Delhi, which is mainly known for the architecture was built by the famous Mughal Emperor Shah Jahan in 1648. It took almost 9 years to be fully constructed. Due to the use of red sandstone and marble, it is known as Redfort, which makes it is unique among other historical monuments. Redfort is one of the architectural marvels of our country and is a great tourist attraction. The Red Fort is also known as Lal Killa and it's famous because of his huge enclosing walls. The Prime Minister of India addresses the country every year on 15th of August. So kids, now you can see it is very helpful. देखा, कुछ ही वर्ड्स में और कुछ ही लाइंस में हमने एक पूरे रेड फोर्ट को एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज़ द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।